Hello friends, welcome you. So today I am going to take a new subject, that is interpretation of statutes. So first of all, I am going to tell you the meaning of statute. So what is a statute? So statute is a law, rules or the regulations which are the written documents by the government, and that government documents are written for the benefit of the people only. So these are the official documents, and these rules and regulation and laws has to be obeyed and followed by the citizens. So first of all, this is a simple meaning of the statute, and for the practical example I can give you the example of the traffic rules. So when there is a red light on the signal, so we have to stop. When there is a green light, then we have to go. So these are some rules made by the state, written in the statutes, so we have to follow that. And another example, we can take our school colleges, like in our schools and colleges there are libraries. So we issue a particular book for particular amount of time, but after some time we have to return that. So this is the rule, and we have to obey and follow that. So these are the examples of statute, that what are the statutes and how that can be implemented in our daily life. So now I am going to tell you what are the types and kinds of statutes. So for this I am going to give you the easier trick or the statement or the phrase to get you memorize, so that you can easily speak all of the kinds without any tension, without any pressure. So be remember a sentence, and that sentence is टीम्स परपेचुअल कोका कोला पार्टी टू डॉक्टर फिक्स इट. ठीक है, ये एक छोटा सा सेंटेंस बनाया है, इससे आपको सारे ही जो टाइप्स हैं मेन स्टेट्यूट्स के वो याद हो जाएंगे. अभी देखिए एक बारी और बोल देता हूँ मैं, टीम्स परपेचुअल कोका कोला पार्टी टू डॉक्टर फिक्स इट. अब चाहे तो बाद में वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं और इस सेंटेंस को चाहे तो लिख के रख सकते हैं, ताकि आप जो है वो आसानी से आप आगे में जो बताने जा रहा हूँ उन्हें रिलेट कर पाएँ. देखिए ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, इसमें सबसे पहले हमको जो फर्स्ट वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड और द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड वी हैव टू टेक. सो फर्स्ट आई टॉक्ड टीम्स. So from the team I am taking temporary. So first of all, temporary statutes are there. These are the temporary statutes, which means that these are for some time only. Now I have given you the next word, that is after the teams. What is there? Teams perpetual. The meaning of the word perpetual is that it exists, it is in existence for longer duration of times. और आप ये भी कह सकते हैं कि अमरता एक तरीके से. तो वैसे इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही अमर हो गया है, मरेगा नहीं, बट इट इज़ परपेचुअल, इट इज़ इन एग्जिस्टेंस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट इफ गवर्नमेंट वांट देन इट कैन रिपील एंड एबॉलिश इट ऑल्सो. सो टू टाइप्स आई हैव टोल्ड यू. फर्स्ट फ्रॉम द टीम्स आई हैव टोल्ड यू द टेम्पररी statutes, and from the perpetual I have told you the perpetual statutes. And now what is the next word? Teams perpetual पार्टी, सॉरी टीम्स परपेचुअल कोका. सो कोका से हम लेंगे सी वर्ड और सी से हम लेंगे कोडिफाइड. देयर आर कोडिफाइड स्टेट्यूट्स ऑल्सो. सो दीज आर द कोडिफाइड स्टेट्यूट्स. आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल्स लाइक द मोटर व्हीकल एक्ट्स and etc. Many of the acts are there. These are the codified statutes. And now what is the next word? Teams perpetual Coca-Cola. So again C word. So from the C we are going to take consolidated statute. So these are the statutes similar like the codified statutes, but here the laws or rules or regulations which are much older, they are abolished. Now what is the next word? Teams perpetual Coca-Cola party. So party, from the party we are going to take the word P. So from the P, penal statutes are there. These are the statutes like IPC, where the punishments are given. You can write it easily. Now the next word, teams perpetual Coca-Cola party डॉक्टर. अभी डॉक्टर के हम दोनों वर्ड लेंगे, डी भी लेंगे और आर भी लेंगे. डी से आएगा डिक्लेरेटिव स्टेट्यूट्स. सो डिक्लेरेटिव स्टेट्यूट्स का मतलब ये है कि इफ एनी ऑफ द स्टेट्यूट हैज बीन मेड
and it is difficult to understand that statute or any specific rule or the provision of that statute, then for that a new statute is made, so that that particular word, particular rule or provision can be explained or declared in much easier way. Now the next is टीम्स, परपेचुअल, कोका कोला, पार्टी, डॉक्टर. डॉक्टर का डी ले लिया, अब आर लेना है. सो फ्रॉम द आर रिमेडियल स्टेट्यूट्स आर देयर. रिमेडियल स्टेट्यूट्स आर नथिंग बट दीज आर मेड फॉर गिविंग सपोर्ट और रिमेडीज टू द प्रीवियस स्टेट्यूट्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेट्यूट is like the word we have टीम्स, परपेचुअल, कोका कोला, पार्टी, डॉक्टर. डॉक्टर का डी और आर दोनों हो गया. अब बचा फिक्सिट. तो फिक्सिट से हमको करना है फिस्कल स्टेट्यूट्स. फिस्कल स्टेट्यूट्स आर दोज स्टेट्यूट्स विच आर रिलेटेड टू द टैक्सेस. सो I hope you enjoyed this video and I have got you completed all of the statutes, the meaning of the statute and the types of statutes. So thank you very much for today's video, and if you can't get anything, then you can repeat the video, you can make your notes, and you can easily write these all things in the exams.